दैट्स राइट स्पेशल टास्क फोर्स के ऊपर पिक्चर है लखनऊ में अंडरवर्ल्ड जब था और उन्होंने कैसे एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया सम कमिटेड यंग पुलिस ऑफिसर्स ने and कैसे उसको टैकल किया जब ऑफिसर्स ऐसे काम के लिए निकलते हैं ऑब्वियसली दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स एवरी डे जो SSP Kumar हैं that's played by it's based on true incidents and true story played by Arshad Warsi जब ये फॉर्मेशन हो ही रहा है तो हमारी जो रोमांस है वो ब्लॉसम ही कर रही है उनकी शुरुआत ही हो रही है एंड एक शादी की बात चल रही है एंड वो उसको होल्ड पे रख के फिर जो उनका कमिटमेंट है अपने काम की तरफ उसको फुलफिल करने के लिए निकलते हैं तो आई गेस आई प्ले द सैक्रिफाइस दैट ही मेक्स फॉर हिज वर्क एंड इट ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं किसी भी फोर्स में हो हाँ उनकी भी एक अपनी ज़िंदगी होती है उनकी भी एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है लेकिन sometimes they have to sacrifice that because they have their own commitment towards work. So I play that sacrifice in the officer's life. Also, the film talks about Sehar, एक नई शुरुआत एक सुबह तो डायरेक्टर चाहते थे कि जैसे बारिश के बाद रेनबो होता है कलरफुल तो आई शुड बी द कलर सो विजुअली आई एम द कलर in terms of costumes जो sarees हैं because I play an economics professor so I'm essentially in sarees बहुत colourful हों it should suggest that Sehar it should suggest that thing which the basic message of the film that you know basically all these efforts of the police was to make the city a safer place to try for you know No, I did. I mean, in fact, when Kabir called me and says, "Oh, okay, he wants to make this film, and there's nothing that I can do much. It's essentially the special task force. उनकी story है, तो मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन जब कभी थोड़ा बहुत शुरू कर चुके थे शूटिंग, तो उन्होंने मुझे वो दिखाई. तो आई थिंक टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा जानते हैं फिल्म के बारे में. तो टेक्निकली ही इज़ क्वाइट एन एक्सपर्ट. बहुत अच्छे से शूट किया था. उनका नैरेटिव बहुत what do you call that? His narrative is very gripping, बहुत dedicated, disciplined, all that is there. जिस तरह से उन्होंने अरशद को डिपिक्ट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा तो देखकर ऐसे ही लगता है कि अच्छा इन्होंने अरशद को ऐसे दिखाया है ऐसे डिपिक्ट किया है तो let's see what he'll do with me. You know, so as an artist, you're always wanting to work with a director who's you know projecting you very well, and so I guess it was that. Because after the initial it was basically that oh he's brilliant, he's a good director, it's the best female part in the film in a male dominated film that is the only female part so okay I'll only learn something from this director. I want to be part of this film. I want to be part of this film is what I felt when I saw this film and I'm happy because it's turned out really good. It's so worth watching and I think Kabir is one of the most talented directors I've worked with, you know. एक्चुअली इस फिल्म की शूटिंग पहले शुरू हुई थी मेरी और अरशद की और इस फिल्म में अरशद का जो रोल है बहुत सीरियस है. ऑफ स्क्रीन भी क्योंकि हमारी बॉम्बे में शूटिंग हो रही थी तो बहुत इनिशियली बहुत सीरियस ही थे वो. मुझे सीरियस लगे ना उसला ये इतनी कॉमेडी कैसे कर लेते हैं स्क्रीन पे एंड थोड़े फॉर्मल थे लेकिन व्हेन वी वेंट इनटू कुछ मीठा हो जाए तो आई गेस आउटडोर्स पे ज़्यादा मिलना होता है. यू आर स्टेइंग विद ईच अदर फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो द अरशद देयर. तो हमारी रिलेशनशिप भी बिल्कुल फिल्म्स की तरह है जैसे ये सीरियस है और फिर कॉमेडी हुई तो रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो लाइक दैट यू नो. वी वर वेरी सीरियस ऑन द सेट्स ऑफ सहर एंड देन व्हेन वी वेंट टू कुछ मीठा हो जाए वी वर लाइक having a blast and then we came back to do the songs of Sehar and then we actually had a lot of fun because तब तक हम एक दूसरे को जान चुके थे. तो अरशद कॉमेडी में तो बहुत अच्छी हैं वो तो लोगों ने देखा है लेकिन even here I mean he's a very very able actor so he's done very very well in this film. You look at him and you're convinced that he's SSP Kumar. I think so. And I give it to the director because a lot of times it's easy for a director to sort of not work on you and just give you what you've done. And here was somebody who was trying to give Arshad something very, very different. And I'm
Really give it to Kabir for taking that step, and Arshad looks very convincing. Yeah, that's my complaint with all my directors also, that I haven't danced in a while to anybody's tune, and maybe in home delivery and Kudiyo Ka Hai Zamana I shall be dancing, yeah. Even in this one, Kabir never gave me the chance to dance, and it was basically montage. It's very realistic. It's a realistic film, so he says, I can't just have this professor of economics and this SSP Kumar suddenly break into a dance on stage and do an item number, so no. He's so strict about it. Not that we suggested, but only in zest. But yeah, you'll probably see me. I'm just trying to keep the variety going, like just give you no dance, and then finally when I dance, you like it. How do you manage to be here, there, and everywhere? I mean, No. so many releases now. No, not at all. I think most of the time people complain that I don't do much, but really, I find it hard to say yes to film because I don't know. It's always been like that since my first film. I've always been so wary of choosing this and that and just done little always.